What will be your answer if I ask you to name a subject that can explain money, music, architect, and the stars? Yep, the answer is maths. Mathematics is a universal language of logic, numbers, and patterns. From counting apples to calculating rocket launches, it's everywhere. It's not just about formulas, it's about thinking clearly, solving problems, and understanding how the world works. Geometry helps us design buildings, algebra helps us solve unknowns, and calculus models everything from speed to population growth. Even your phone screen resolution or social media algorithm, all maths driven. Mathematicians don't just work with numbers, they predict weather, protect data from encryption, and even model how diseases spread. So, all in all, maths isn't just a subject, it's a superpower that runs the world. Everything you touch, taste, or breathe is made of chemicals. And do you want to know how it all works? Well, welcome to the chemistry. Chemistry is the science of matter, what it's made of, how it changes, and why it reacts. From cooking food to lighting a candle, every reaction is chemistry in action. Chemistry helps us to understand the structure of atoms, bondings of molecule, and the energy that fuels reaction. This field branches into organic, inorganic, physical, and analytical chemistry, each exploring a different dimension of matter. It used in medicine, cleaning products, makeup, agriculture, energy, and so much more. Chemists design medicine, creates new material, and even help combat pollution. So, chemistry is the magic behind reality. Only it's the real science. Would you believe if I told you the ground beneath you is alive with secrets of billions of years ago? Well, earth science will help you understand this. Earth science is the study of our planet, its structure, history, and natural processes. It covers geology, rocks and earthquakes like meteorology, weather and climate, also oceanography with seas and currents, and astronomy, Earth's place in space. Uh, all in all, Earth science is the study of, या हम ये कह सकते हैं, Earth science consists of geology, meteorology, oceanography, and astronomy. It also answers why do volcano erupts, how do mountains form, what causes earthquake and tsunamis. Earth scientists investigate it all. They use satellite, field research, and data to understand our planet's past and predict future changes like climate pattern and natural disaster. This science also help us to locate mineral, conserve water, and stay safe from the natural hazards. Earth may seem still, but it's constantly changing, and Earth science help us keep up. Why does ice float? Why do some reactions explode while others stay slow? Well, physical chemistry is the branch where chemistry meets physics and it explains how and why chemical reactions happen using concepts like energy, pressure, temperature, and atomic behavior. You will explore reactions rate, thermodynamics, quantum mechanics, and equilibrium. Ever heard of pH levels or Gibbs free energy? That's physical chemistry helping us understand the rules of chemical change. It's used to design better medicines, improve fuel efficiency, and even understand climate change at a molecular level. Basically, it's the science that explains the science behind reactions. So, physical chemistry answers why behind every wow reaction. Metals that don't rust, salts that glows, acid that burns. Sounds magical now, but it's just a pure science. Inorganic chemistry is the study of compounds without carbon. It focuses on metals, minerals, salts, acids, bases, and gases like oxygen and chlorine. Think of the vibrant color in fireworks. That's metal salt in action.
or the hardness of diamond, the formation of crystal, and the reactions in batteries, all explained by inorganic chemistry. It's essential for fields like metallurgy, material science, and even nanotechnology. Inorganic chemists study how elements bond, react, and form solid structures. They also play a big role in creating fertilizers, pigments, ceramics, and semiconductors. From your kitchen salt to your mobile battery, it's all organic magic. So, next time you see a spark or a crystal, remember that's pure chemistry at work. Something invisible be powerful enough to change the world? Microbiology is the study of microscopic organisms like bacteria, viruses, fungi, and protozoa. These tiny beings shape our health, environment, and even our survivals. Some cause diseases like flu or COVID 19, while others help us digest food, make cheese, or purify water. Microbiologists explore how microbes grow, reproduce, and interact with humans, animals, and nature. This science is at the heart of vaccines, antibiotics, biotechnology, and even space research. Without microbiology, we wouldn't understand immunity, fermentation, or infection. So, they may be tiny, but microbes rule our world. What do your thoughts, heartbeats, and hunger have in common? They all depends on chemistry. Biochemistry is the science that explains life at the molecular level. It studies how molecules like enzymes, hormones, proteins, and DNA work together to keep you alive. From how food turns into energy to how insulin regulates sugar or how your brain signal your hand to move, biochemistry is behind it all. It's crucial in medicines, genetics, and nutrition. This field helps scientists design better drugs, understand diseases like cancer or diabetes, and even create life saving vaccines. It's the perfect mix of biology and chemistry, unlocking the secrets of the life processes. Your body is a lab, and biochemistry is the science behind it. So always remember it. Hey, have you ever wondered what's really inside your body? Let's take a tour. Anatomy is the study of the structure of the human body. It's map out organs, muscles, bones, and how everything fits together. Doctors, surgeons, physiotherapists rely on anatomy to diagnose and treat issues. Want to know where your liver is or how your spine supports your body? Anatomy gives those answers. It also helps us understand how injuries affect movement and how surgeries are safely performed. So, to know your body, to love your body, it starts with anatomy. Your heart is beating, your lungs are breathing, and you are not even thinking about it. How does it all work? Well, physiology is the branch of science that can answer your all questions. Physiology studies how organs and systems function. It explains everything from how muscles contract to how the brain sends signals. It tells us how hormones maintain balance, how the kidney filters blood, and how you react to heat, cold, or fear. Physiology is crucial in medicine, sports, science, and even psychology. It helps us understand both health and disease, why we feel tired, how we get fever, and what happens during exercise. So, physiology is the hidden science that can keep you alive. Volcanology, did you ever hear about this volcanology? Well, volcanology is the studies of volcano, lava, and tectonic activities. Scientists monitor gas emissions, seismic activity, and magma movement to forecast eruptions. For instance, warning signs helped evacuate thousands before Mount Pinatubo erupted in 1991.
So basically, volcanology will protect communities living in the shadows of fire mountains and help them to save their lives. The ground to shake suddenly, well, seismology will help you in finding the answer. Seismology is the study of earthquake and seismic waves. Seismologists use instruments to monitor tectonic activities and predict potential earthquakes. For example, early warning system can save lives during natural disaster, and seismology helps us understand and prepare for a sudden shift. To discover the lost civilizations, well then archaeology must help you. Archaeology is the branch of science that studies human history through excavation and analysis of artifacts. From ancient ruins to buried cities, archaeologists uncovered tools, pottery, and structures to reconstruct past culture. For example, the discovery of the Indus Valley cities revealed an advanced urban society. So, archaeologists uncover the stories hidden beneath the soil. Our ancestors, and how did we evolve? Well, the answer lies in anthropology. Anthropology is the study of humans past and present. It covers cultural practices, languages, and biological evolution. Anthropologists examine ancient tools, bones, and traditions to understand how humans lived and interacted. So, anthropology helps us understand where we come from and who we are. Cutting down one tree affect an entire forest? Well, you have to study ecology to understand the effect of that. Ecology is the study of interactions between organisms and their environment. It helps us understand food chain, habitats, and ecosystems. Ecologists study how pollution, climate change, and invasive species impact biodiversity. So, ecology teaches us the delicate balance of nature and how to protect it. Doctors and researchers understand what keeps us healthy. The answer is health science. Health science is the branch of science that studies the human body, diseases, and healthcare system. It includes medicine, nutrition, public health, and diagnostics. For example, understanding how viruses spread helps design effective vaccines. So, health science is vital to improving and maintaining the well being of individuals and packaged food safe, tasty, and long lasting? The answer is food science. Food science is the branch of science that explores the biology, chemistry, and engineering behind the food. It focuses on preservation, processing, nutrition, and food safety. For instance, pasteurization of milk kills harmful bacteria, making it safe to drink. So, food science ensures we eat safe, nutritious, and quality food every day. How science helps feed billions of people? Well, agriculture science is the answer, and agriculture science is the branch of science that mainly focuses on improving farming techniques, crop production, and livestock management. It studies soil health, pest control, irrigation, and plant genetics. For example, developing drought resistant crops helps farmer grow food even in challenging climates. So, all in all, agriculture science nourishes the world sustainably and efficiently. How do detectives solve crimes with just a strand of hair? Well, forensic science helps them. Forensic science is the branch of science which applies to the criminal investigations. It involves analyzing DNA, fingerprints, blood samples, and digital evidences to uncover the truth.
For example, forensic experts can identify a suspect from a crime scene using a tiny trace of DNA. So, forensic science is the bridge between science and justice. If bacteria could cure disease or clean oil spills? Well, biotechnology uses living organisms and biological systems to develop products that benefit health, agriculture, and the environment. For example, insulin used by diabetic is made using genetically modified bacteria. So basically, biotechnology merges life science and technology to solve real world problems. Have you ever spoken to Alexa or seen a self driving car? Well, I'm sure you have. It's the new branch of science. It's called artificial intelligence or AI. And AI is all about creating machines that can simulate human intelligence. It learns from data, recognizes pattern, makes decision, and even predict outcomes. Example includes Netflix recommending shows or AI in smartphones recognizing your face. So, all in all, AI is shaping the future by making machines smarter and life easier. Wonder how the tallest building or fastest cars are made. Well, engineering is the answer. Engineering is the application of science and maths to solve real world problems. It covers various fields like civil, building infrastructure, mechanical, machines, electrical, electronics, and more. Engineers design, build, and improve everything from bridges to software. For example, a mechanical engineer may design an electrical vehicle while a civil engineer ensures the road it's travel on are safe and durable. So whether it's a road or a robot, engineering turns ideas into reality. Who makes sure your data is safe and system runs smoothly? Well, it's IT, means information technology. IT focuses on managing and processing informations using computers and telecommunications. It involves setting up networks, managing database, securing digital systems, and providing tech support. For instance, when you access a cloud storage platform, IT professionals ensure it runs securely and efficiently. So, IT keeps our digital lives connected, organized, and protected. Can a machine think and move like humans? Well, yes, and it's under robotics. Robotics is the science of designing and building intelligent machines that can perform tasks. It blends mechanical engineering, electronics, and computer programming. From robotic arms in factories to humanoid assistants, robots are revolutionizing industries. An example is a surgical robot that helps doctor operate with precision. So robotics brings machines to life to work, explore and even save. आपने सोचा है कि अगर किसी इंसान को या किसी की बॉडी को हम -150 डिग्री सेल्सियस तक कोल्ड करके स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ऐसा पॉसिबल है? वेल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी एक ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स लो टेम्परेचर साइंस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर तक ले जाया जाता है। इसका यूज़ मतलब कि ये जो हमारा क्रायोजेनिक है, ये जो पूरा मेथड है, इसका यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, रॉकेट फ्यूल स्टोरेज में होता है। लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक्स में कॉमनली यूज़ होते हैं। कुछ लोग क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि जो बॉडीज़ है, जो डेड बॉडीज़ है, उनको फ्रीज़ करके रखा जा सके, लंबे टाइम तक उनको स्टोर करके रखा जा सके। वेल क्रायोजेनिक्स के बारे में आपने कभी सुना है या नहीं सुना है तो ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि अर्थ के अलावा कहीं और भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है? वेल इस बारे में हमें बताती है एस्ट्रोबायोलॉजी।
एस्ट्रोबायोलॉजी साइंस की एक फैस्किनेटिंग ब्रांच है जो कि ये एक्सप्लोर करती है कि लाइफ का ओरिजिन क्या है, एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, और अर्थ के अलावा भी क्या लाइफ की पॉसिबिलिटी है कहीं और किसी और प्लैनेट पे। ये जो फील्ड है एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और जियोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन है। और जो हमारे नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी होती हैं, वहाँ पर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अदर प्लैनेट्स पर ये डिस्कवर कर सके कि वहाँ पर लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, अभी है या इन फ्यूचर हो सकती है या नहीं हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब मार्स के ऊपर वाटर के ट्रेसेस मिले थे, तब एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने उस डिस्कवरी को स्टडी किया था और ये जानने के लिए कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो एस्ट्रोबायोलॉजी एक फ्यूचरिस्टिक साइंस है जो हमें बताता है कि शायद हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा और भी प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो क्या कभी आपने बायोफिज़िक्स के बारे में सुना है? बायोफिज़िक्स जो है उसके अंदर फिज़िकल प्रिंसिपल को यूज़ करके बायोलॉजिकल सिस्टम को समझा जाता है। यानी कि अगर हम इस फील्ड की बात करें तो इस फील्ड के अंदर जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन के सिग्नल है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग्स है, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं उनका यूज़ किया जाता है फिज़िक्स के थ्रू आंसर करने के लिए। जो हमारा एमआरआई स्कैन होता है, लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर किया जा रहा है, ये क्या है? ये सारी टेक्नोलॉजी है जो फिज़िक्स से रिलेटेड है। बट इसका यूज़ किस लिए किया जा रहा है? इसका यूज़ किया जा रहा है हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए। एमआरआई क्यों किया जाता है? बॉडी के अंदर की तो इशू को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है? बॉडी के लिए तो किया जा रहा है। हार्ट बीट मॉनिटर कर रहे हैं, हार्ट को ही तो मॉनिटर कर रहे हैं ना। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ जब किया जाता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोफिज़िक्स बोलते हैं। तो बायोफिज़िक्स साइंस का एक ऐसा मैजिक है जिसमें बायोलॉजी और फिज़िक्स दोनों को मिलाकर हम हेल्थ और लाइफ के सीक्रेट्स को रिवील करते हैं। आपने ने अपने आसपास एनिमल्स को तो देखा होगा, चाहे वो पेट एनिमल्स हो, चाहे वो स्ट्रीट एनिमल्स हो, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हो। आपने उन्हें अपने आसपास तो कभी ना कभी देखा ही होगा। बट कभी आपके मन में ये सवाल आया कि ये जो जानवर है जो आपके सामने है वो आपसे क्या कहना चाहता है, या वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर एक साइंस की ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी बेसिकली एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करता है उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में। ये ब्रांच जो होती है जूलॉजी और साइकोलॉजी का मिक्सचर है। जूलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड साइकोलॉजी यानी कि उनका जो पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न जो है उसके बारे में। तो एक जानवर क्या सोचता है और किस तरीके से बिहेव करता है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, इसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। जो इथोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे ग्रुप्स में रहते हैं, क्यों एग्रेशन दिखाते हैं, कैसे खुश हैं या उदास हैं या नहीं है, कैसे पता चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेन गॉडवेल ने चिंपैंजीज के बिहेवियर को ईयर्स तक स्टडी करके ये दिखाया था कि वो हमारी तरह किस तरीके से जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो शो करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो इथोलॉजी है वो हमें ये बताता है कि जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पे काम नहीं करते हैं, एनिमल्स के पास भी इंटेलिजेंस जो होती है वो प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी को ही हम न्यूरोबायोलॉजी कहते हैं, स्पेशली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। न्यूरोबायोलॉजी की ब्रांच के अंदर बेसिकली हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझते हैं और न्यूरॉन्स किस तरीके से सिग्नल्स को ब्रेन से लेकर जाते हैं और कैसे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचते हैं, हमारी मेमोरी किस तरीके से काम करती है, पूरा ब्रेन के फंक्शन को डिकोड किया जाता है इस ब्रांच के अंदर, हमारी मेमोरी से लेकर हमारे इमोशंस तक को। फॉर एग्जांपल, अल्जाइमर डिजीज़ की रिसर्च में ना न्यूरोबायोलॉजी का बहुत डीप रोल है। अल्जाइमर में इंसान जो है अपनी याददाश्त को खोने लगता है, ठीक है। तो ऐसे में उस इंसान के दिमाग की स्थिति का जो स्टडी की जाती है वो की जाती है न्यूरोबायोलॉजी के अंदर। न्यूरोबायोलॉजी हमारे दिमाग के राज खोलती है और हेल्थ से लेकर एआई तक सब कुछ, एआई तक कई एरियाज़ को शेप करती है। आँखों से इस पूरी दुनिया को देखते हैं और हमारी आँखों के पीछे की जो साइंस है ना उसी को हम
ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के बिहेवियर को, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, लेंसेज को, इनके बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक है, इसका यूज़ कैमरा में, लेंसेज में, ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप में, लेज़र्स में, इवन टेलीस्कोप में भी होता है। और ये फिज़िक्स की एकदम फैसिनेटिंग ब्रांच है। फॉर एग्जांपल, हमने जो आप सब में से किसी ने भी अगर स्पेक्स का यूज़ कर रखा हो या जो लेंस वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर भी ऑप्टिक्स के फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। और ये लेंसेज जो होते हैं हमें चीज़ों को अच्छे से देखने में हेल्प करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स दुनिया को देखने का एक साइंटिफिक तरीका है, एक तरीके की क्लैरिटी है कि हम चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं, किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट किस तरीके से बिहेव कर रही है, लाइट का पैटर्न क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। मीडिया पे लाइक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो सब डाटा साइंस से स्मार्ट बनता है। आप सभी ने डाटा साइंस के बारे में तो सुना होगा। डाटा साइंस की वो ब्रांच है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि पैटर्न्स को समझा जा सके और उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सकें। इसमें स्टैटिक्स का, कोडिंग्स का और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सिस्टम देखा होगा, वो डाटा साइंस की वजह से ही काम करता है। वो क्या करता है कि आपने अपना पिछले जो भी आपका हिस्ट्री रही होगी, आपने जो सर्च किया है या जिस तरीके के शोज़ आपने सर्च करे हैं, उससे रिलेटेड आपके सामने क्या होगा, पूरा का पूरा रिकमेंडेशन आ जाएगा कि अगर आपने ये देखा है तो आपको ये भी पसंद आएगा, अगर आपने ये देखा है तो आपको ये भी पसंद आएगा। ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये बेसिकली डाटा साइंस है कि हमारा डाटा कलेक्ट हुआ कि इस पर्टिकुलर इंसान ने पिछले 10 ये शोज़ देखे हैं, तो इसकी बेसिस पे हमारे सामने आगे और 10 शोज़ ला के रख दिए गए। यही हमारी डाटा साइंस है, जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पर आगे की इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है। साइंस की एक ऐसी दुनिया भी है जो आपके हेयर की विड्थ से भी 1000 गुना छोटे स्केल पर काम करती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पर मटेरियल को डिज़ाइन और मैनिपुलेट करने की साइंस होती है। ठीक है, हम स्मॉलेस्ट लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं कि जो आपका एटम और मॉलिक्यूल है उसका यूज़ करके मटेरियल से किस तरीके से हम काम निकाल सकते हैं। इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिसिन बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी में, इवन फूड सेफ्टी में भी इसका यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कैंसर का जो टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है उसमें नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है मेडिसिन को कैंसर सेल्स तक पहुंचाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी दिखने में छोटी है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सोचा है आर्टिफिशियल हार्ट या जो प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वेल, इसका आंसर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है। इस फील्ड में मेडिकल डिवाइस, इमेजिनिंग सिस्टम और बायोकम्पैटिबल मटेरियल को डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्सरे मशीन हो गई, एमआरआई स्कैनर हो गया या जो पेस मेकर होगी, ये सब के सब बायोमेडिकल इंजीनियर्स के ही गिफ्ट हैं। किसी इंसान का हार्ट काम नहीं कर रहा, उसमें हमने आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया। किसी का पैर कट गया था, उसको आर्टिफिशियल पैर लगा दिए। किसी का हाथ कट गया था, उसको आर्टिफिशियल हाथ लगा दिए और अब वो ह्यूमन बॉडी में अच्छी तरीके से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ये क्या है? ये बायोमेडिकल इंजीनियर का ही तो पूरा का पूरा मिरेकल है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है हमने मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यही होता है हमारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के अंदर। तो देखा जाए तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस और मेडिकल के बीच का एक ऐसा ब्रिज है जो ज़िंदगी बचाने के साथ साथ उसको बेहतर बनाने के लिए भी काम करता है। ऊपर बिलियंस ऑफ स्टार्स की दुनिया है और उसे समझने के लिए एक साइंस है जिसको कहा जाता है स्पेस साइंस। स्पेस साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। हमारा यूनिवर्स जिसमें बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, वाइट होल्स, गैलेक्सीज और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी स्टडी को ही स्पेस साइंस कहा जाता है। और इस फील्ड में सैटेलाइट, स्पेस मिशन और टेलीस्कोप्स की मदद से कॉस्मिक मिस्ट्रीज़ को डिकोड किया जाता है। हमारे यहाँ से जो चंद्रयान या फिर जो हमारा मार्स रोवर जैसे मिशन जिनको लॉन्च किया गया था, ये सारे के सारे स्पेस साइंस के ही रिजल्ट हैं।
तो बेसिकली स्पेस साइंस हमें यूनिवर्स का सिटीजन बनाता है और यूनिवर्स में जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट है उनके बारे में हमें बताता है, हमें आउटर स्पेस के बारे में बताता है कि अर्थ के अलावा बाहर एक दुनिया जो है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और उनके बारे में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे स्पेस साइंस से हमें पता चलती हैं। स्टैटिक्स इन बायोलॉजी, ठीक है। बायोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो बायोस्टैटिक्स बायोलॉजिकल डाटा के एनालिसिस करता है, ठीक है, स्टैटिक्स का यूज़ करके, ठीक है। बेसिकली इस ब्रांच का यूज़ क्लिनिकल ट्रायल्स में, जेनेटिक्स में, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस ब्रांच का मतलब इन सारे डाटा का बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जितना भी बायोलॉजिकल डाटा हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं हम स्टैटिक्स के साथ और फिर हम निकालते हैं उसमें से हमारे पास जो सही तरीका होता है, जो एक्यूरेट कंक्लूजन होता है उसको निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने क्या किया, कोविड की वैक्सीन बनाई। उसके ट्रायल के लिए हमने क्या किया, हमने 15 से 20 लोगों के अंदर हमने उस दवाई को, उस वैक्सीन को लगा दिया। अब उन 15 से 20 लोगों का जो भी बायोलॉजिकल डाटा है कि उनकी हार्ट बीट क्या है, उनका हार्ट पल्स रेट क्या है, उनकी जो बॉडी है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है, ये पूरा का पूरा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब ये जो बायोलॉजिकल डाटा है इसका हम स्टैटिक्स के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर हम पता लगाएंगे कि जो वैक्सीन हमने बनाई है वो यूज़फुल है भी या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली बायोस्टैटिक्स क्या है, बायोस्टैटिक्स में बायोलॉजिकल डाटा के ज़रिए साइंस स्टैटिक्स का यूज़ करके हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो दवाई हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये यूज़फुल है भी या फिर जी। वायरोलॉजी साइंस की कैसी ब्रांच है जो वायरसेस को स्टडी करती है। वायरसेस के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनका रिप्रोडक्शन और डिजीज़ में किस तरीके से जो वायरल डिजीज़ है वो हम पर इम्पैक्ट डालते हैं, इन सब की स्टडी वायरोलॉजी में की जाती है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बॉर्डर है। तो इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। इस फील्ड के अंदर वैक्सीन को डेवलपमेंट करने से लेकर और वायरल आउटब्रेक होने पर उसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वायरल आउटब्रेक को किस तरीके से कंट्रोल करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो और HIV जैसे जो वायरसेस थे उन पर हमने बहुत रिसर्च करके नई नई वैक्सीन्स बना के ट्रीटमेंट डेवलप किए, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई। और रिसेंटली अगर देखें तो कोविड-19 जो था वो भी एक वायरल डिजीज़ का ही केस था। वहाँ पर भी वायरोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ही वहाँ पर उस पूरे के पूरे कोविड-19 वायरस के ऊपर स्टडी करके उसका वैक्सीन प्रिपेयर किया था। ये पूरा स्टडी करके कि वो जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन सी दवाई उसके ऊपर जो है इसके अगेंस्ट में काम करेगी। तो ये पूरा का पूरा जो था वो कहाँ से हमने किसके बेसिस पे स्टडी किया, वायरोलॉजी के बेसिस पे स्टडी किया। सोना, चांदी सिर्फ गहने नहीं हैं या सिर्फ टूल्स बनाने में यूज़ नहीं किए जाते, ये सारे के सारे मेटल्स हैं जिनकी स्टडी साइंस का हिस्सा होती है और इसको कहा जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मेटल्स और अलॉय के एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। और इस चीज़ का, इस ब्रांच का यूज़ कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में, यहाँ तक कि आर्ट में भी किया जाता है। मेटल्स की स्ट्रेंथ और डिज़ाइन मेटलर्जी के रिसर्च से ही आती है। मेटलर्जी में जो मेटल्स की स्टडी की जाती है उसके बेसिस पे ही हमें पता चलता है कि किस मेटल का यूज़ हम ज्वेलरी बनाने के लिए कर सकते हैं, किस मेटल का यूज़ हम कार बनाने के लिए कर सकते हैं, किस मेटल का यूज़ हम कंस्ट्रक्शन वर्क में कर सकते हैं, या किस अलॉय का यूज़ हम किस पर्पस के लिए कर सकते हैं। ये सारे के सारे पर्पस, किस मेटल का यूज़ किस पर्पस के लिए किया जा सकता है, इसकी क्लैरिटी हमें मेटलर्जी से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन की जो इंजन है वो लाइट वेट होते हैं और हीट रेजिस्टेंस अलॉय से बने होते हैं। हमें कैसे पता कि हमें यही मेटल चाहिए था या हमें इसी तरीके का अलॉय चाहिए बुलेट ट्रेन का इंजन बनाने के लिए? ये पता चला हमें मेटलर्जी से, जिसमें हमने ऑलरेडी अलग अलग मेटल्स और अलॉय के बारे में पढ़ रखा है। तो हमें पता है कि हम किस पर्पस के लिए किस मेटल या फिर किस अलॉय का यूज़ करते हैं। तो मेटलर्जी मेटल के मैजिक को बताता है कि मेटल्स का यूज़ करके हमने कितनी सारी चीज़ों को कर लिया है। ज़मीन के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस चालू रहते हैं और उस साइंस को हम जियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जियोकेमिस्ट्री अर्थ के रॉक, सॉइल और वाटर बॉडीज़ में जो केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है।
जियो केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम मिनरल्स के ओरिजिन, वोल्केनो के नेचर और फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सभी को पता है कि जो पेट्रोलियम और कोल फील्ड्स डिटेक्ट करे जाते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? जियो केमिस्ट की हेल्प ली जाती है। जियो केमिस्ट्री ही एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हमें बताती है कि अर्थ के किस पोर्शन से हमें क्या मिल सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जियो केमिस्ट्री अर्थ की केमिकल्स कहानियों को बताता है। ये बताता है कि हर पत्थर के पीछे साइंस छुपी हुई है।